Hello बच्चों, let's read this question. Assertion: the reaction of C6H5CO2, C2H5 and CH3SO2 C6H5 in the presence of C2H5ONA gives C6H5COCH2SO2 C6H5. Reason: in sulphones, the hydrogens alpha 2 sulfur are acidic and undergo Claisen-type condensations with esters. And following options are given to us. So सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है Claisen कंडेंसेशन रिएक्शन. Claisen कंडेंसेशन रिएक्शन. सो लेट अस सी फर्स्ट Claisen कंडेंसेशन रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं. एंड इन Claisen कंडेंसेशन रिएक्शन कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एंड दैट इज इन बिटवीन द टू डिफरेंट एस्टर और वन टाइप ऑफ एस्टर ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड. एंड Claisen कंडेंसेशन रिएक्शन एक बेस की प्रेजेंस में होता है एंड एट द एंड जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज द बीटा कीटो एस्टर और ऑल्सो नोन एज बीटा डाइकीटोन. सो लेट अस राइट अबाउट दिस. It is a reaction. It is a reaction in which carbon carbon bond formation takes place. Formation takes place between two different esters. Between two different esters. Esters or one ester. One ester and another carbonyl compound. Another carbonyl compound in the presence of in the presence of a strong base. Strong base resulting in a beta ketoester. Beta ketoester or a beta diketone. Beta diketone. एंड जो जनरल रिएक्शन होता है लेट अस से कि हमारे पास एस्टर है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश reacted with R C double bond O R dash in the presence of base. सपोज कोई भी हमारे पास बेस प्रेजेंट है एंड H3O पॉजिटिव वर्कअप करवाने के लिए एसिडिक वर्कअप करवाने के लिए H3O पॉजिटिव लेते हैं एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ R C double bond O and R C double bond O R dash. इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एंड अलोंग विद दिस ROH is formed. So जो मेजर प्रोडक्ट है that is the beta keto ester. एंड फॉर दिस रिएक्शन जो हमारे पास कार्बोनिल से नेक्स्ट ग्रुप है और वी कैन से जो हमारा अल्फा कार्बन है वहाँ पे हाइड्रोजन की प्रेजेंस होना ज़रूरी है बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ बेस अगर हम मैकेनिज्म की बात करें लेट अस से वी हैव आर सी इट इज आर ओ सी डबल बॉन्ड हमारे पास ये कोई मॉलिक्यूल है एंड यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस लेट अस से हमारे पास NaOET बेस है एंड
प्रेजेंस ऑफ बेस में हाइड्रोजन abstract हो जाएगा, which means deprotonation of the alpha carbon takes place and it will lead to the formation of this negative charge. हाइड्रोजन रिमूव हो गया एंड deprotonation हो गया. नाउ जो हमारे पास एक और मॉलिक्यूल होगा एस्टर का, that will come RO carbonyl group in this way, and due to difference in the electronegativity जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा एंड दिस इलेक्ट्रॉन और this carbon will approach the carbonyl carbon and it leads to the formation of RO carbon double bond and this oxygen will have negative charge. This will be OR and अब जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर दैट विल कम बैक और जो ये OR ग्रुप है ये लीव कर जाएगा. दिस इज द लीविंग ग्रुप एंड जो हमारे पास फॉर्मेशन होगा दैट विल बी RO double bond. This will be formed. एंड अब हमारे पास रिएक्शन में बेस प्रेजेंट है एंड जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे दैट इज मोर एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेस. NaOET की प्रेजेंस में जो ये हाइड्रोजन है दैट विल गॉट डीप्रोटोनेटेड एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड इसीलिए हमने H3O पॉजिटिव डाला था रिएक्शन में सो दैट एसिडिक वर्कअप हो सके एंड जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट इज द डाइकेटोन. सो दिस इज फॉर्म्ड एज द फाइनल प्रोडक्ट. ये मैकेनिज्म होता है एंड जो हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज द C6H5. ये हमारे पास बेंजीन रिंग है जिस पर कार्बन है एंड दैट हैज OC2H5 and this is reacted with C6H5 S double bond O oxygen CH3. सो हम देख सकते हैं ये तो हमारे पास एस्टर है बट दिस इज सल्फोन ग्रुप. दिस इज सल्फोन, सल्फर प्रेजेंट है and it is said that in the presence of C6H5 ONA, C6H5 ONA and this is a strong base. ये एक strong base है. Strong base की presence में it will lead to the formation of C6H5 C double bond O oxygen and SO2 C6H5. So हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा अकॉर्डिंग टू द assertion given to us and this is correct because जो सल्फोन पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है which means this hydrogen ये more acidic है and in the presence of base this will get deprotonated and after that ester attack कर देगा as per the mechanism and it will lead to the formation of this. Hence we can say जो assertion है that is the correct और जो reason given है हमें which says in sulphones the hydrogen alpha to sulfur are acidic and undergo Claisen-type condensation with esters.
दिस इज करेक्ट बिकॉज क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन में तो हम ओनली एस्टर्स लेते हैं, बट हियर सल्फोन इज प्रेजेंट एंड अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस की वजह से and reaction with the ester, it give the product just like the Claisen-type condensation reaction. So by this we can say that both assertion and reason are true and R is the correct explanation of assertion. So हमारा आंसर हो जाएगा A, both R and A are true and R is correct explanation of A. Correct explanation of A. So option first is the final answer of this question. Hope the solution was understandable. Thank you.